So, chapter number 13, and yesterday we started the topic of karst topography, and we have discussed what karst topography is and what are the conditions which make any area uh, to be called as a karst लैंडस्केप या कार्स्ट टोपोग्राफी उसकी क्या कंडीशन थी कि उसमें 80% से ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन हो, पैटर्न्स ऑफ जॉइंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हों, इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर इट मस्ट हैव एरेटेड जोन यानी खाली कैविटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर below the ground, and then it must have vegetation cover which supplies organic acids for the special weathering process to go on. ठीक है, ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी. And then today we will continue the same topic, and now we will discuss some of the special features found in a karst landscape. So first feature is called as sinkhole. Okay, so when chemical weathering, in a karst landscape, the most common type of weathering is chemical weathering. So due to chemical weathering and due to complex patterns of joints and due to weaker stones, excuse me, the limestone region or the top of the surface collapse. The ground collapses and some sort of depressions or holes are formed, and those holes or depressions in a karst landscape are called as sink holes. It's a hole in the ground which has sunken down, जो दब जाए, जो sink हो जाए, तो ऐसे holes sink hole कहलाते हैं और sink hole limestone region में है. Then there's another word for sinkhole, and that is doline. So there's not much difference. Initially, those were called as doline, and now the word sinkhole is used. So this sinkhole is formed when the roof of an underground cavern collapses. क्योंकि sinkhole में हमने बात की थी जब कास्ट टोपोग्राफी की कंडीशन की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक लैंडस्केप को कास्ट लैंडस्केप बनाती हैं, तो उसमें ये कंडीशन थी कि देयर मस्ट बी रेटेड जोन, ज़मीन के अंदर हॉलो कैविटीज़ होंगी. सो दोज हॉलो कैविटीज़ वही केव्स बनाते हैं, वही कैवर्न्स बनाते हैं. जब बहुत छोटे हों तो उनको खाली रेटेड जोन या रेटेड कैविटी भी कहते हैं. उस कैविटी की जो रूफ है वो कैविटी की रूफ है और हमारे लिए वो जो ऊपर चल रहा होगा उसके लिए वो ग्राउंड है. सो दैट रूफ कोलैप्सेस ड्यू टू कंटिन्यूअस वेदरिंग. I'm sorry. Okay, so that roof collapses and a sinkhole is formed. So this is one special feature of karst landscape. Then when the roof collapses, it's called as collapse sinkhole. And then we have another type of sinkhole, which is called as solution sinkhole. So that's a sinkhole in which
the surface material, it collapses or it weathers out slowly. कोलैप्स सिंक होल जो है वो सडन ब्रेकेज से एकदम से बहुत बड़ा पार्ट टूटेगा, जबकि सॉल्यूशन सिंक होल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वेदरिंग होगी और आहिस्ता आहिस्ता एक होल की फॉर्मेशन होगी. If you guys remember 2 years back or maybe I think 3 years back, लाहौर में एक जगह पर बारिशों की वजह से रोड पे बहुत बड़ा सा होल बन गया था. और कराची के अंदर भी कुछ जगहों पे जब बारिशें होती हैं तो सड़क एकदम से कोलैप्स करके वो ज़मीन के अंदर चली जाती है और एकदम से एक बहुत बड़ा सा होल बन जाता है. वो भी एक तरह का सिंक होल होता है. तो एकदम से जब बने तो वो कोलैप्स सिंक होल है, और स्लोली और ग्रेजुअली बने कभी ऐसा भी होता है. हैव सीन के रोड की सरफेस है जिस पे हैवी व्हीकल या भारी गाड़ियां जब चलती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रोड वहाँ पे दबना शुरू हो जाता है. सो दैट कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन सिंक होल. ओके, देन क्योंकि ये कार्स्ट लैंडस्केप है और ये बहुत बड़े एरिया पे फैला होता है जहाँ पर भी आपको कार्स्ट लैंडस्केप मिलेगा, तो जब कंटिन्यूअसली और यू कैन से व्हेन मैनी सिंक होल्स आर फॉर्म्ड विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर बराबर में बहुत से सिंक होल्स बने, तो अल्टीमेटली दोज continuous sinkholes or those adjacent sinkholes result in the formation of karst valley. वैली क्या है? एक दबी हुई ज़मीन कंपेयर टू द सराउंडिंग. सराउंडिंग में ऊंची सरफेस और नीचे बीच में ज़मीन थोड़ी नीचे होगी तो वो वैली है, जस्ट लाइक अ माउंटेन वैली. तो जब एक सिंक होल होगा उसका एरिया छोटा होगा बस, बट एक सिंक होल बना, थोड़े टाइम के बाद उसके बराबर में एक सिंक होल बना, फिर वो सिंक होल का साइज़ बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म अ वेरी बिग एरिया एंड दैट बिग एरिया विल बी कॉल्ड एज कार्स्ट वैली. और इसकी डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, इलोंगेटेड डिप्रेशन अप टू सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग. सिंक होल गोलाई में, जबकि वो बहुत सारे गोल आपस में मिल गए तो वो एक लंबा फीचर बन जाता है. एंड दैट इलोंगेटेड डिप्रेशन is up to several kilometers long. All right, so this is an example of sinkhole. You can see ये किस शहर में है? In the Guatemala city, ये साउथ अमेरिका में है. और यहाँ पर you can see sinkholes have formed. सो इसी तरह से होता है कि ग्राउंड सडनली कोलैप्स होता है, पहले उसके ग्राउंड के अंदर हॉलो कैविटी बनती रहती है उस केमिकल की वजह से, वाटर टेबल की वजह से, और उसकी सरफेस लगती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी या रेजिस्टेंट, बट देन इट कोलैप्सेस. Okay, so this is an example where sinkhole is seen और उस sinkhole पे pond बन चुका है. So sinkholes are common. Okay, so this is the structure of a typical karst valley or karst topography. So here you see ये जो गोल गोल डिप्रेशंस हैं, these are sinkholes. और जब बहुत सारे sinkholes मिल जाते हैं तो ज़मीन वहाँ पर elongated depression की फॉर्म ले लेता है, and that is karst valley. ओके, और यहाँ आप अंडर द सरफेस देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ irregular शेप की कैविटीज़ हैं. दीज आर कॉल्ड एज एरेटेड zones. Okay, then there we have the disappearing stream. क्योंकि stream उस वक्त
ज़्यादा अच्छी किसी भी एरिया में सर्वाइव करेगी जहाँ पे रॉक्स रेजिस्टेंट होंगे, वो स्ट्रीम के शेप को मेंटेन करेगा। लेकिन कार्स्ट लैंडस्केप के अंदर कहीं पर भी होल्स बन जाते हैं और कहीं पर भी ज़मीन बहुत जल्दी वेदर आउट होती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रीम अपनी प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ वहाँ पे नहीं फ्लो कर सकता। दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी disappearing streams right here. This is another sinkhole where water has accumulated, और of course जहाँ पर भी एलिवेशन कम होगी पानी वहीं पे जमा होगा, इसलिए अक्सर लो एलिवेशन पर आपको पानी मिलेगा. All right, then there's another feature, and that feature is called as cockpit cast. There you go. Cockpit, जैसे जहाज का cockpit होता है, cockpit cast, it's a sinkhole which is circular in shape. Here you go. Symmetrically shaped sinkhole is called as a cockpit cast. Then we have tower cast. The karst landscape found at high elevation. Tower cast. हाईलाइट हुए हुए हैं, आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं. Okay, cockpit cast, tower cast, collapse, sinkhole. Um, there was another one, I forgot that name. Yeah, solution sinkhole, collapse sinkhole, tower cast, cockpit cast, karst valley. So ये different formation है जो karst topography या karst landscape पे पाए जाते हैं. Here's another cockpit cast. It has symmetrical shape. Okay, that's in Puerto Rico. And there they are installing the world's largest radio telescope. Okay, अब कुछ बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड फीचर्स की. कास्ट लैंडस्केप. Okay, there's a question that I must explain tower cast again. So टावर कास्ट कहते हैं ऐसी कास्ट या ऐसा सिंक होल या ऐसी कास्ट टोपोग्राफी. इट कैन बी अ सिंक होल, इट कैन बी अ होल लैंडस्केप विच इज़ फाउंड इन हाई एलिवेशंस, जो काफ़ी ऊंचाई पर किसी प्लेटो के ऊपर या किसी पहाड़ी एरिया में ऊंचाई पर मिले तो उसे टावर कास्ट कहते हैं. ओके, देन caves and caverns. As I have told you, these are cavities, hollow cavities in the ground or in the rocks. Caves are smaller in size, caverns are larger in size. Okay, caves are generally formed just beneath the water table. So right now you can just understand that caves and caverns are kind of the same thing, except the only difference is um, the size. Okay, so this is another sinkhole. You see the real example of a sinkhole, and then this is a column, and I'm showing you something else. Okay, there. This is a typical example of a cave
in a karst landscape. So that karst landscape or that cave is found under the water table, यानी जहाँ पानी का लेवल वाटर टेबल होता है उसके नीचे, इनिशियली यू कैन से वो पानी में डूबा हुआ केव होता है. बट देन व्हाट हैपेंस कि वाटर टेबल उस जगह पर लो होने लगता है. सो व्हेन द वाटर टेबल लोवर्स डाउन, उसके लो होने की वजह से वो केव खाली होना शुरू होती है, यानी पानी से खाली होती है. और वहाँ पर पानी के नीचे होने की वजह से, बिकॉज दैट वाटर टेबल लोअर्स डाउन इन अ वेरी स्लो स्पीड, और काफ़ी स्लो स्पीड में पानी या वाटर टेबल वो नीचे सिंक करता है, जिसकी वजह से उस केव के अंदर, उस अंडरग्राउंड केव के अंदर डिफरेंट फॉर्मेशंस बन जाती हैं. वो क्या फॉर्मेशन है, उसका सबसे कॉमन फॉर्म कहलाता है ड्रिप स्टोन. ड्रिप स्टोन एंड ड्रिप स्टोन लुक लाइक दिस, यानी ऐसा पत्थर जो पानी के ड्रिपिंग की वजह से बने, उसे कहते हैं ड्रिप स्टोन. द स्टोन्स और द कॉलम, ये लंबाई में, ये जैसे हाथी के जो टस्क होते हैं, हाथी के दिखने वाले जो दांत होते हैं, ये उस शेप के होते हैं डोमिनेंटली. सो द elongated stones formed due to dripping of water in a in an underground cave in a karst topography. Okay, these are the stones formed by dripping of the underground water in a karst landscape in an underground cave. So that cave, ये आपको ये केव, इस वक्त जो केव नज़र आ रही है अंडरग्राउंड, एक टाइम ऐसा था कि इस केव में सारा पानी भरा हुआ था, एंड दैट वाटर स्लोली स्लोली वेंट डाउन, और अब इसका लेवल यहाँ तक आ गया है जहाँ आप देख रहे हैं. सो दिस इज़ नाउ द वाटर टेबल हियर. वो पहले यहाँ पर था, जहाँ पे मेरा पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है. ओके, सो इसके नीचे होने की वजह से ड्रिप स्टोन्स बने, पानी की ड्रिपिंग की वजह से. नाउ ड्रिप स्टोन्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक वो स्टोन जो केव की छत पे आपको नज़र आएगी, राइट, और एक वो स्टोन जो केव के फ्लोर पे आपको नज़र आएगी यहाँ पर, हियर, राइट. One drip stone is on the ceiling or the roof of the cave, while on the other drip stone is on the floor of the cave. Okay, जो सीलिंग में, जो छत पे ड्रिप स्टोन बने, उसका नाम है स्टैलेक्टाइट. You can see the spelling here, stalactite. The drip stone formed at the roof of cave, stalactite, and the drip stone formed at the ground and on the floor is called as stalagmites. So you can see stalactite में C है और stalagmite में G है. So C is for ceiling या छत and G is for ground, ज़मीन. तो ये एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है. आप स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट को ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एंड जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाती हूँ, आई रिमेंबर स्टोरी फ्रॉम हैरी पॉटर सीरीज. सो व्हेन हैरी वाज गोइंग अंडरग्राउंड, जो उनका विजिटिंग बैंक था ग्रिंगॉट्स, सो देयर they were going inside and Harry has seen stalactites and stalagmites and he was asking Hagrid के इन दोनों में फ़र्क क्या है, what is the difference between stalactite and stalagmite. So Hagrid wasn't feeling well, so he said stalagmites and has G in it. तो बात उसकी भी सही थी, stalagmites में G है and that G means ground and this C is the ceiling. तो इस तरह से आप इसको differentiate कर सकते हैं. And sometimes or many a times what happens that stalactite and stalagmite get connected. So at that time, that connected stone is called as a column. There it is, column. जब stalactite और stalagmite join हो जाए तो उसे column कहते हैं. All right, then we have the drip curtain. We can say it's not a stone, it's kind of a wall or a big stone. So that is a drip curtain.
और यहाँ पर आपको केव के अंदर कोलैप्स ब्लॉक्स भी मिलेंगे, एकदम से बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स करती हैं। सो यू फाइंड दिस एज़ वेल एंड देयर वी हैव अंडरग्राउंड स्ट्रीम, पानी का लेवल जब नीचे गया है तो अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स हैं। और देन दिस इज़ अ कोलैप्स्ड सिंक होल। आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना सारा कोलैप्स मटेरियल पड़ा है, क्योंकि ये एकदम से मतलब इकट्ठे बहुत सारा मटेरियल सिंक हो गया। So this was an underground cave. So you see, this is a close-up of dripstone, and this is a pool in an underground cave, and these are soda straws. तो ये आपको अंडरग्राउंड केव्स के अंदर, बल्कि अगर आपका किसी केव में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो ये सारे फीचर्स वहाँ पे नज़र आते हैं। So that was all for today.